Now you can start. Okay, good afternoon, everyone. My name is Achintya Vajpayee, and the state I was allotted was Arunachal Pradesh. A little about Arunachal Pradesh. It is the largest among the seven states in the northeast. It shares its borders with Bhutan, China, Myanmar, and the Indian states of Assam and Nagaland. The state is divided into five river valleys: Kameng, Subansiri, Siang, Lohit, and Tirap. The problem that I identified in Arunachal Pradesh was the lack of tourism. The state's rich biodiversity, landscape, flavorful cuisine, diverse culture, and hospitality of the people make it ideal for traveling. But still, it is not a popular tourist destination. So, why is that? A survey conducted by the World Travel and Tourism Council, the India Initiative, in 2019 ranked Arunachal Pradesh at the bottom of the list. The states were given rankings after evaluating it on 11 parameters, which included number of branded hotels, GSDP per capita, literacy rate, aircraft movement, ease of doing business, urbanization, road and rail network, marketing campaign, expenditure of the state on tourism, and number of tourist visits. Uh, a different methodology was employed for the point system for each of the parameters. So if anyone is interested, I can share the document on the WhatsApp group, and so that you can go through it once. Uh, a case study was also done on opportunities and challenges of tourism industry in Arunachal Pradesh. It was done by two professors from Jawaharlal Nehru College and Rajiv Gandhi University in Arunachal Pradesh. Uh, WG Gyana and RC Parida are the name of the professors. The study takes Tawang district as an example and does SWOT analysis on it. So the case study lists out various weaknesses due to which tourism is affected. So one of the main reasons is low budget allocation. Tourism sector received only about 1.4% of the total budget announced for the fiscal year 2020 to 2021. There's also safety issues. Insurgency problems in the state has led to the tourists considering it as a disturbed state, and it leaves them concerned about their safety. Non-monetization of natural scenic assets like waterfalls and valleys is a missed opportunity for revenue generation. The state also falls under restricted area, which means that official permission is required to enter the state, and thus anyone other than the native of the state is required to obtain an inner line permit before entering the state. And there's also a lack of active marketing campaign, which also like affects the tourism. Thank you. Good to read or good to know about how the you have presented. Students, see here how Achanta have presented. The data he took is here, of course, the third slide. We took on the data about how the statistically is what exactly the parameters are there. And I was amazed to see that because AP is at bottom, of course, in the data, and because of the low budget, we are talking about the tourism more and more. Ministries and departments are talking about tourism more and more, but still, because of the low budget, it means so much talks are around. But of course, once we call up or once we go for the budgeting of those programs, it is not at on the ground, of course. One more other reason, of course, he presented, and you all guys have presented, those who have presented for Northeast, that is the insurgency. So if a state or a union government is not taking a hard step for these insurgencies and the safety and security of the people, the tourism will get affected, of course. And good to see this fourth slide. That is what I was actually saying, that you need to go through the some of the research work which academicians keeps on doing. They keeps on doing this research work, putting it on the various modes and various means. They are actually flagging this research work. So do research on those things so that you can actually see. They have taken the SWOT analysis, that is what is the strength, weakness, what is the opportunity and threat, and based on that he also have presented at the last of the slide. The last slide is actually saying what is the weakness of the strength, what is the weakness of the state, which can be actually uh, it can be utilized, or it can be actually
uh, turn it as an strength too. More specifically, the last point, that non-monetization of tourism products, although it was there or it is there in their pockets, in their area, but still such schemes are not there, or such facilities or such availability of people, availability of resources are not there, and that is why we are talking more about. And good, of course, Anita, good you have placed. Thanks. Move on to the next one, who is actually. Thank you, sir. Thank you, madam. Who is the next? Abhinav Yadav. Avinav, are you there? Good evening, sir. Yeah. So state given to me is Andhra Pradesh, Mm, and the problem is the farmer suicide. okay. Uh, is, Agriculture, is there any presentation with you, or you will be saying only on that? sir, I'm saying only. Okay, okay, no worries. So agriculture and allied sectors in India account for 14% of GDP and were a source of livelihood for 58% of the population for the fiscal year 2016-17. India has around 260 million people living in poverty, and 80% of them live in the countryside. About 72% of land holdings are small and marginal land holdings less than 2 hectares, and they cannot reap the benefits of economies of scale. Since 1960, the real agriculture growth rate in India has been on an average of 2.8%. Indian farmers are in a state of distress, and this is manifested by the increasing number of farmer suicides. Between 1995 and 2012, a total of 284,673 farmers committed suicide in India. As you all know, Andhra Pradesh has one of the highest rates of farmer suicide between 2010 and 12. There were 47 farm suicides per thousand population. The corresponding figure for all India during the same period was 15 per thousand population. And the scheme is also there. The intervention assumes a hypothetical farmer loan waiver scheme that waives all formal loans of individual with land holding sizes less than 2 hectares. Government of Andhra Pradesh recently announced a loan waiver of INR 24,000 crores. Okay, So that's Abhinav, you have stated that okay, so much suicide and death rates are there. I yes, do sir. want to the one of the data which is very much relevant, that how our land farmers usually, if we talk about why this situation is occurring in all various other states also, in Maharashtra also, in Western Ghats also, there are certain occasions arising around out of this, that farmers are going for a suicide. What can be what is the prime reason for this? Abhinav, Yes, sir. Yes, sir. what is the prime reason for this? So prime reason, Why they are committing suicide actually? Is government is not helping them out, or they feel that people will not be helping, or their crop production is not there, or the yield which is actually they are focusing for is not coming up? What is the exact so I think reason behind this? crop production, sir. Anyone would like to actually comment it here? Why such occurrences are there in India? So what I think that government is not waiving their loan, and basically due to sometime what happens, the rain doesn't happen, and we so basically due to lack of rain, and government is not waiving their loan. So that is why I think the farmer committing suicide. Can you quote somewhere that it's not been waived? Can you Sir, give some basically, examples on that? sir, I don't have dedicated data, but from basically I've heard from the TV channels and You know, newspaper that you know why this problem is occurring. The very first reason is, earlier, if you see the data of land farmers, okay, the farmers who own the land, due to the urbanization,
These farmers, what they did is actually in the past 20 years or so, they sell off their lands. Okay. And now, firstly, they became a land laborers. The Yes, very sir. prime reason that this transformation is happening. So very few number of people are there, those who are the farmers now. First thing. Second thing, whatever we are talking about or whatever we all are, suppose any of the scheme is there, suppose any of the scheme is there or anything which we are talking about, that this schemes is there, people need to go there, and the waiver is there from the government. This is not actually the case. People are not at all aware about this. We are not going towards those people, those who are actually in need. Or there are certain tough criteria are being set, have been set actually in that. Because of that, these farmers are not getting the benefit of out of those schemes and Excuse the me, sir. policies. Yes, yes. Sir, I think sir, there's a so one more problem is also there that the crops that the some of the farmers are producing, so they are not able to sell it at good price. Of course. See, that's what I am saying. I'm saying that whatever the policies or whatever the schemes are there by the government, either the union government or the state government, firstly, they are not aware of. Secondly, the criteria has been set, it's not for them actually. And thirdly, they, whenever the crop yield is there, in spite of going to a market at Mandi, they are they are going towards other farmers, those who are the big farmers, coming under a trap of those farmers, and that is why more and more suicide cases are going on. So these all three cases or the three major reasons behind this farmer suicides, and not only in Andhra Pradesh. If you see the case of Maharashtra, the more number of cases because of this only, that these people are going to the big farmers and they become the trap of these big farmers. They are not actually approaching to the government machineries or government bodies because the criteria has been set likewise. That is why they are not going actually. So we need to make whatever the policy or whatever the scheme we are making, that should be much more accessible to these people. We are making a policy for farmer, and if farmers are not getting the benefit out of that, then what is the use to make that particular policy? Yes, you have, please. Okay, so Sir, good. now my doubt is clear. Okay, okay, good. Okay, okay. Thanks, Abhinav. Who is going to present next? Adya Gupta. Okay, Adya. Yes, sir. Which state? So my state is Assam. Okay. Sir, is my screen visible? Yes, of course. Uh, good evening, everyone. I'm Adya Gupta, and the state allotted to me is Assam. Uh, So, a little about Assam. Assam is a state in northeastern India, which is known for its wildlife, archaeological sites, and of course, tea plantations. And this state is bordered by several other states like Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, and Assam is very much prone to natural disasters like annual floods and frequent mild earthquakes. So, previous year, Assam faced criticism for ranking at the bottom in Niti Aayog Sustainability Development Goals. So, the Assam Chief Minister said that there has been a lot of underreporting of data. For example, if you see that data, Assam's household electrification is 30%, whereas now it is 100%. We can see the underreporting of data here. So to solve this problem, the Assam government will ink MOU with Northeastern Space Application Center for extensively using satellite data. Also, the main problem that I have taken is uh, the facing of natural calamities like floods and drought that hit Assam every now and then with various other uh, natural calamities. This is a map showing how the river Brahmaputra and other rivers in Assam state uh,
result in floods and droughts in various regions of Assam. Uh, so the evidence for this is that the river Brahmaputra and its various tributaries cause floods frequently. So Assam faces a lot of damage, like their crops, homes, and public places. Everything is affected, and it is only increasing every time. Therefore, due to a huge erosion caused by the river, Assam is facing a huge loss in economical development. Therefore, we can say that a huge sum from the state's fund goes towards the relief of this flood and the repair from the floods every year. So the state of Assam is also taking measures, like the chief minister pointed out that the norms of relief and rehabilitation provided to the flood affected people as per the state disaster response fund guidelines are low, and substantially increasing funds for so that the floods could be prevented or it could be mitigated, and the state could remain prepared for the floods that are to become, or the rehabilitation that is to be prepared after the flood or the natural calamity has been occurred. The chief minister also vouched for Niti Ayog's intervention to include river erosion in the admissible list of calamities for funding under NDRF, so that quick and timely steps can be taken to counter erosion. Thank you. Good, Adya. Of course, you have taken something different which we are talking about. We have been talking about this, that how we can our in the past during uh, Atal Bihari Vajpayee's time, he was actually in thought of ki, let us go for a river linkage across India, so that this situation which is coming every now and then in either the Bihar or the West Bengal or Assam or Northeast states, usually they are facing more and more about the earthquakes or the this occasions. Natural floods are coming on every year, of course, 3 months of time or the 4 months of time. These places are in the floods, and if you compare with other states like Maharashtra, Jharkhand, Saurashtra, these Maharashtra, Saurashtra, and of course Tamil Nadu, this belt actually the Western Ghats, this belt is having drought and all. So if we are interlinking this particular all the rivers, if we are able to interlink, then these situations can be actually tackled enough. Only thing, once you are saying that, okay, I am going to talk about the soil erosion, or I am going to talk about uh, the the calamities which is occurring. Uh, do take care of or do take the consideration for the data on soil erosion, because if you have a data about the soil erosion for Assam state and also the comparative data of other states, then we can actually compare that okay, this data uh, is actually giving or this data is sufficing whatever you are saying. So whenever you are talking about any of the problem and you are saying that this is the main reason, try to locate or try to find out the data for that. That is soil erosion data for Assam and comparative data for other states. Two good points, of course, she mentioned. Okay, I can understand that there is an under-reporting of the data, or there are all the malpractices going around for data reporting across India. Of course, it's not only the case of the Assam. Across India, it can be. But what is the way out? How to mitigate from this to that for the betterment? One best way is what actually Assam government has thought for, or they have signed the MOU with NESA. By satellite monitoring, they are trying to go for the data, and because of that, you can prove it. Okay, that not 30% of the people are with electrification, 70% or 80% or 100% people are there with the electrification in my state. One good, of course, opportunity.
or one good thought taken by the Chief Minister of Assam. And one more thing, if he is saying that let us include river erosion into the natural NDRF uh, uh, NDRF criteria for natural calamities. In terms, he is saying that whenever we are saying that a river erosion is there, some funding should be there, and some support shall come out of NDRF team also. And that is why he is saying, see, whenever we are saying that, okay, please put this particular prime object, or please this put this particular prime uh, uh, calamity or the problem area in that particular criteria set, it means that government is forcing to, either the state government is forcing or central government is forcing that this should actually, these authorities, these people, this ecosystem should work on that. By saying this, that river insurance should go to NDRF, uh, Honorable Chief Minister actually is trying to do this. Please move on to the next one. Yeah, you have, please. What is MOU she mentioned, sir? It's a regulating body or sir, Adya, what? please go to that. Adya, can you open that? Yes. So The MOU is MOU, something agreement kind of thing. Yeah. MOU is between state of Assam with that is National Electronics, Northeast Space Application Center. Now, what this any SEC will do, whatever is the data is coming out of this Space Application Center, they will use this data for monitoring or for giving to various agencies. So they are using a technology where we are saying that, okay, because somewhere down the line they have said that, okay, on the top it is written Assam household electrification is 30%, and chief minister is saying, no, no, it is not 30%, it is 100%. But the problem lies here is, he is saying that underreporting is there because of this. It is actually stated like 30% or so. So what next step he has taken actually is, no, no, I am not believing on this data. Let us call other body, that is Northeastern Space Application Center, for extensively using satellite data in various applications. So now this particular organization will actually monitor that. Got it? Okay. Now you can close, Adya. Who is next? Purnima. Purnima, are you there? I think she is not here. So she Okay. is. She is. Purnima, I think her mic is not working. Purnima, can you hear us? हम लोग को सुन सकते हो आप? Yes, sir. Yes. Would you like to present? Yes, sir. Just a minute. ठीक है. Okay. Which state you are taking? Sir, Tamil Nadu. Okay. So may I start? Yeah, please. Good evening. This is Purna Mishra, and I was provided with the state of Tamil Nadu. And the social issue which I found was unorganized workforce in Tamil Nadu. Purnima, your screen is not visible to us. Sir, I'm sharing the content. Okay. So, is the slide? So are the slides not visible? No, it's not. Yeah, now it is visible. Okay.
Okay, now you can proceed. Purnima, Extreme. are you there? Yes, sir. I guess there are some Yeah, yeah. network issues. I'm being reconnected. Okay, okay. Do one thing, Purnima. Just go with a pre-read on that. Need not to display because I think network connectivity is not there with you. So she can share the her PDF or PPT on the WhatsApp group and I'll share. That you can do. Purnima. So unorganized workforce means a problem statement for whom? Which ministry? Students, which ministry is actually the major stakeholder for unorganized workforce? Suppose this problem is arising in your state, your specific state. Which department or ministry you will write a letter? So Ministry of Labor and Employment. Yes. You need to map. It's not that I have given you the problem statement. You need to map your problem with the state department or the ministry too. Next time if I ask you, okay, this is problem, and now write a letter to the uh, uh, the to the bureaucrat or to the minister, then you will again come and ask, sir, which ministry? So at least whenever you are doing this, map it कि इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी होगी, कौन सा डिपार्टमेंट होगा. Purnima, are you there? Okay, I think she is trying for it. Uh, what can be uh, what can be your suggestions on this? Why this unorganized workforce is having so much problem? So what can be the problem area for that? Can anyone say? If people are not working in an organized sector, what can be the end number of problems will be there? Can anyone can actually unmute yourself and say on that? If you are So not, government is not making so much of vacancy. That is why unorganized force work is increasing day ठीक by है, day. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, if you are working in unorganized sector, what can be the problem areas? So the major problem area is that basically my boss would be regulating my number of hours, and that number of hours can be unreasonable. And basically, I can be forced to. Basically, I am having a threat that I will be fired at any point of time. That's a major threat that the people are having in organized sector. Yes, Okay, irregular wages. irregular wages will be there. Sir, there won't be any job security. Job security will not be there. Time bound for working, some time Uh, for working hours. no time, no time hours actually, working hours for them. And so no scope for pensions. No scope for pension, attention. And even I will not get assistance of I will not get medical assistance and all facilities which are getting in organized sector. Hmm. So So these are the major problems. the facilities which are there from government or organized sector, there are employment insurance scheme is there. They are getting the benefit. They are getting the benefit of PF. They are getting the benefit of EPFO.
these benefits will not be there for them because they are not working in organized sector. And the major threat for them, if they are not working in this atmosphere or the organized sector, what will be the major threat? The job security, according to me, is a major threat in unorganized sector. There is one thing is left out, what you all guys have covered, that is safety and security will not be there for the person. See, if you are working in an organized sector, there is a basic guidelines been given to those sectors, those departments, those ministries, that okay, workplace mein this safety is to be there, this much is to be there, fire units shall be there, and entry and exit point shall be there, attendance shall be there, lighting shall be there, toilet shall be there. But if you are working in unorganized sector, chances can be that these facilities will not be there. And So, because but of what these, I think So that means that no basic government, facilities will also be provided in huh, unorganized. there can be the chances. Okay, and if these are there, if this situation is there, that there is no such facilities of common facilities or common amenities which is required for an individual to work in, there can be the chances that health of the individual can deteriorate, or other different factors are actually working in. That is So why this can also lead to depression or stress also for depression an individual. also, stress also, they will be losing their interest on work, because see, if their career progression is not there. So yeah, Alok, please. so basically, what I think that many times there are certain guidelines for the unorganized sector also. They also have to maintain the humane condition for their workers. It is there, but you cannot actually see, regulations are always for the regulating Organized bodies sector. are only going to the organized sector. They are not going to the unorganized sector for any of the verification. Okay, they are not bound actually to do that. Yes, Purnima, can you start? Sir, I have a question. Yeah, please. So as you said that only basically the guidelines which are issued by the ministry, so that is for only organized sector. But so for example, if I talk about minimum wages, minimum wages is applicable for both organized and unorganized. So it doesn't matter that you are working in organized, but you have to maintain the minimum wage level. When So that comes actually in the picture, when that fight comes in, you know about that. sorry, sir, I didn't get it. When that fight comes in, No, that sir. whether the person is getting a minimum wages or not, when actually that particular fight comes, or when you will come to know about that, do you know this? That will be raising demand. Then only we can get it. See, minimum wages act is there, and it is applicable to each state and union territory also, and of course the union government, and it differs. For Uttar Pradesh it is different, for Andhra Pradesh it is different, for Gujarat it is different, and as per the profile, as per the type of work, this is also different. For industrial employee it is different, for non-industrial employee it is different, for clerk it is different, for labor it is different, for laborers those who are working in railways it is different, for railway labor those who are working for in mining sector it is different, for laborers those who are working in airports it is different. So as if you go with the minimum wages act, very precisely they have given, if for each and every job role, what can be the minimum wages act, what can be the minimum hours they need to work in, for state what is the limit, and for center, if you are hiring from center, what is the limit. But until and unless the person he or she who is getting the salary, if he is going and asking for that, then only the role of minimum wages act comes in. Because in an unorganized sector, usually no one cries, no one goes, or no one actually knocks the door of the this thing, legal system, or no one knocks the door of the boss. So usually this is not the case in organized sector, but organized sector it is the case. But whenever they are going for hiring, whenever even they are hiring for a driver also, if they are hiring, they are going with the minimum wages act. If they are hiring
helper also in the office, they are going with a minimum wages act. Organized sector, but unorganized sector, it is not the case. Got it, Alok? Yes, sir. So basically means that in unorganized sector, basically it is not always that the minimum which is act is being followed or being implemented. There are the chances, that these people are not following, and if they are not crying and if they are not going, then that particular organization is also not bound to do, because they are coming under unorganized sector. Okay, Excuse me, sir. yes, Sir, Purnima is not able to reconnect. reconnect. Okay, so who else is left out? Khushi, Aditya Singh. Aditya, are you there? Yes, sir. Yeah, please start. Which state you are going to cover? Sir, Bihar. Good. So Greatest state of Bihar is a India. state. Yes. Bihar is a state in eastern India. It is the third largest state by population and 25th largest by territory. So Bihar's one of the major problem is higher education. Higher education is a powerful means to improve socio-economic condition of a country. A country can develop tremendously by imparting fruitful education to the citizens and developing science and technology. Skilled human resource is an asset who can convert the most backward economy to a developed one. The present paper examines issues of higher education Bihar, the problem that hinder the progress of higher education and the possible solution to overcome the situation. Bihar is one of the most populous states of the country. The density of the population is highest among the major states of the country. The literacy rate of Bihar in 2001 is 61.8%, among which male literacy is 71.2% and female literacy is 51.5%. In higher education, both for general and technical stream, less than 1% of the population is enrolled in higher education. The gross environment enrolled ratio in higher education among 18 to 23 years age group is in Bihar is about 14.9% against the national average of 25.2% in 2018-19. So, what's the reason for it? The craving for higher education among the general population of Bihar has led to a migration of a student community from the state. This has led to a flooding of students to seek education opportunities in other states such as New Delhi and Karnataka for graduation level. Researchers found out that 37.8% of Bihar's teachers could not be found during announced visits to colleges, the worst teacher absence rate in India and one of the worst in the world. Thank you. Good to know that 37.8% of teachers are not going. I don't know if this is the status of our education system in states, then it is very much difficult to actually ask students to come in. See, the uh, uh, major thought for all those who are in the education, or the major thought or the major force given by education department or the ministry is just to regulate this dropout for the standard of students, those who are in 10th standard or 12th standard, or of course graduation and PG level. And in case of Bihar, the data itself is saying that we are lacking, and we need to think for how to mitigate with this, how to address it, how to ask parents to come in, enroll their students, how what incentivize, what all the, because midday meal is not working. If you see, it is there since last so many years. Midday meals are there. This scheme is there. People are there. They are getting a benefit out of it. But saying that midday meal is actually serving that and asking your students or parents to send their wards to school is not the correct actually methodology, I must say, so that we can address this dropout. Some better programs or some better thoughts shall come in now, that how we can actually address this particular dropout issue. It's not only for this Bihar only. This dropout issue is there in various other states also, for higher classes, senior secondary classes also, and for graduation and post graduation. uh, Aditya,
what is your view on this? How we can address it? So I guess new teachers should be hired. Uh, More educated teachers from other states should be hired for this, for government colleges. Any other option which is coming around in your mind कि ये भी हो सकता है? Second, participants also speak about it. Sir, I think major factor in Bihar is the mindset. So because the mindset of the people there are not much on the education side, and sir, and the people who want to get educated or want to go for higher studies, they go in other states because they are not having the correct facilities for them provided by the government. Excuse me, sir. Yeah. So I don't think that it is feasible to take teachers from other state. So what we can do to current teachers who are working in the government schools of Bihar. So basically, if they are not having any knowledge, so basically what we have seen in many time media reports have been published that the people who are teaching in government schools, they are not having a basic knowledge. So what we can do an immediate suspension of them, or we can try to improve. Basically, we can, as Arvind Kejriwal did in Delhi. So instead of changing the teachers, what he did, he tried to upskill the performance of those teachers. So same thing can also be done in Bihar. So instead of changing, we can also teach them that what is the method of teaching to that teachers who are working in government college and schools. That's it, sir. Any other thought on this? Alok, you are very well correct. Of course, whenever we are talking about education system, how to, of course, upgrade this education system. See, revoking teachers or making them to go out of the school will not actually help this dropout. Two major pointers on this is, firstly, ask teachers to go for peer learning. The teacher which is good to make them to actually make students to read. The teacher among the schools, just identify some teachers, those who are good, to go for peer learning, so that uh, students and other teachers are also getting an inspiration or inspired by that particular teacher. Use the skill of that particular teacher for the second teacher to actually upskill their method to teaching first, and use these teachers to go and visit certain parents also. Because see, it's not only that that पढ़ाई अच्छी नहीं, it's not only like such that teachers is not good, teachers are not good. There are several occasions, there are several actually a number of cases where these parents are not actually forcing, or these parents are not agreeing to send their kids. So So that you is why I mentioned about the mindset of the people in huh, Bihar. so what you need to do is, see, if I and you will go, they will not respond on that. But if teachers are going and eligible teachers are going, not that ki what all teachers should go, not that headmisters or headmasters should go, the eligible teacher, the role model for that particular village, the role model for that particular tehsil, they should go. They should conduct certain workshops. They should conduct certain meetings with these parents first, because once they will actually mingle up with these parents, they will come to know that there are certain number of parents, those who would like to actually send their words, but still not sending them to the schools. So this will create a system that, okay, students will or parents will interact with the school management basically. Okay, and once this interaction will be there, simultaneously run a program for peer learning for teachers, those who are not good to actually teach. Or if you are taking up some other different methodology, like Alok was saying that Arvind Kejriwal did for their schools, for their government schools, we did in Uttar Pradesh for our schools, that peer learning programs are going around. Likewise, plan those peer learning program for other teachers too. I think this can help out uh, to And sir, address I it. have another suggestion also. Mhm. Sir, basically the conditions of the government school in Bihar, UP, and other states, the kind of government buildings are there.
So basically, no one would like to study or no one would like to teach in those buildings. So we actually, so infrastructure where Delhi government schools are having is totally different from infrastructure in Bihar, UP. So But the one thing government, is there, apart from that, Alok, yes, sir. uh, going with infrastructure will not give you uh, the corrective measure for this. But It will so not be it's a not basically, it's an additional long factor term which we can add. solution. It's not a conclusive. This will not be a long term solution. Yes, Kushi, Yeah, please. yeah, I know that, sir. Yeah, so I wanted to say that when I went for the survey, actually my mother's friend is a teacher and she teaches in a government school. So she had one problem that कि government जो पैसा दे रही है, it's not getting utilized properly because some only few government schools have improved from Hindi medium to English medium, and secondly they also don't have smart class option. That is why their learning is very behind from those who are studying in private and convent institutes, because they don't have smart class nor they are studying in English medium. So that is the main problem, and government jo bhi paisa deti hai, it's not enough for them to improve their measures taken by them for improving the education system. And many parents also, like in COVID, she told me that they were only teaching students through WhatsApp group only, and they had no other connection with the students through Zoom or online sessions because there was connectivity issue. Like most of the parents were not having cell phone, and they were not able to study through online mode because of that. Of course, see, these are the problem areas for in the education system. Still, we need to upgrade our education system, but it will take time. But see, if I am saying that okay, I need to upgrade an infrastructure of a school, somewhere down the line, 1 to 3 years it will take. But not going to the parents, not visiting to the students, not upgrading or upskilling our teachers, and saying that okay, whenever the infrastructure will be good, then only we will do. Then we will not able to address it. Simultaneously, all the 3 legs, all the 4 legs, we need to work on. We need to upskill the teacher also. We need to communicate with the parents also. We need to upgrade the school also, and we need to utilization of those fund, the proper utilization of those funds, and even ask for the corporates to come in, ask for the society to come in. Schools like good schools like DPS, Jaipuria, and other schools. If I give you the name of Lucknow schools, uh, uh, these schools should prepare a peer learning program for those rural area kids. The students, those who are in 8th standard, 10th standard, they should devote their 1 hour time or 2 hour time with these the students of 5th standard or 6th standard. At least they will come to know okay कि पढ़ाई में होता क्या क्या है, what all the methods are there by which we can actually go on. See, there are certain ways we need to create an awareness among the parents also, among the students also. कुछ टीचरों को भी नहीं पता है कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है. So we need to upgrade at all the fronts actually, all the 4 fronts. If we are upgrading, then only we can address this dropout. Khushi, anyone else is left out? I think she is not Yes, able. sir. So also wanted to add a point Yeah, that infrastructure तो बहुत बाद में आता है, जब तक teachers और parents के बीच में coordination नहीं होगा, and when the parents will not understand कि education कितना important है उनके child के लिए, then they will not send the child to any school, even that is it's why. That is why. See, छोटा school हो, बड़ा school हो, any type of school, but they need to send their wards first. And उसके लिए हमको उनको communicate करना पड़ेगा the advantage of the education system, कि उनको हम क्यों भेज रहे हैं, उनको हम क्यों बुला रहे हैं. वो अगर आप बताएंगे तब वो आएंगे. उनको उनको रोल मॉडल सेट करने पड़ेंगे आपको जाके वहां पे. Yes, sir. So, Ayush Dikshit and Samriddhi will not be able to present their work today because they are having some issues regarding their family. Okay. And rest Kinshuk is absent, and Aryan Mohan also is absent.
Okay, Ayush So Dixit I and wanted to ask Aryan Mohan and Kinshuk Srivastav. okay. So I wanted to ask that कई students की 2 strikes हो गई है and third strike is the termination one. So one student is already terminated. Ask these students to go and do the compensatory work Compensation plan. work. हाँ, Okay, sir. ask all of them, those who are uh, due for the second actually strike or the termination. Don't give them and send them that okay, you need to actually send this uh, compensatory work plan against that. If they are giving it, we will not actually go for a striking of them and termination of them. Okay, sir. And it's of course easy one. Yeah, having a mobile with an internet and all, each and every information is there in your mobile itself about the president election, which is going to come in the month of July. Okay, so yes, anything you would like to ask in regard to the problem statement of the states or the evidence, just for a revision sake, or shall I start for today's discussion? So we shall start with the president election. Okay. Before going for a president election, I had one question to you all. मैं बात करूंगा and I will not go with any presentation. आप लोग लेकिन you keep on writing because whatever the data I am going to say or tell you the next day with when we are meeting or when our meeting is there, I will ask definitely about that. So keep on writing. The very first question among for you all, अगर आपको एमपी और एमएलए सेलेक्ट करना होगा तो आप किस पैरामीटर में उसको सेलेक्ट करेंगे? So is he having any criminal record or not? That will be my first parameter. And the second parameter would be so basically how well he is committed. So basically, was he active for a whole 5 years, or basically he was asking for the votes in for basically just for 2 months before the elections? So these are the two parameters which I will see. Sir, according to me, sir, I will see that they are mostly connected to the people or not. So they are going on the groundwork or not. ठीक है. You all can actually say on this how you will choose or how you are going to choose your MP or MLA. At least सबसे एक एक point आना चाहिए. Sir, he must be literate. Priyansi, your point. Priyansi, are you there? Yes, sir. How you will choose your MP or MLA? On what criteria? Sir, I will actually choose one if he or she is popular and if he is actually going to do things after getting selected. Okay, Khushi, yours? So Khushi that Srivastav? I will. Okay, sir. So his prior actions would decide if he has already done something, then he would do for the betterment of the society in the future also. Okay, Shreya, yours? Education. Okay, Samriddhi, yours? Education. Shreya, of course. Samriddhi, your view on that? How you will choose your MP or MLA? Samriddhi Srivastav. Are you there? Khushi, yours? So that he or she should have some year of experience, and that's also I will see that. Okay, Achantya, yours? So that he doesn't just make false promises but also acts on it. Okay, Dipankar, yours? Sir, according to the popularity and experience. Alok, yours? You have said, of course, but yes, sir. you can order.
So I think that criminal record will be the main parameter for me. And other than that, basically, yes, of course, literacy also matters, and how he is committed. So these things are will take into consideration while giving my vote. Okay, Sivank, your hands are raised. Anything you would like to Yes, say? sir. I want to to say that he should be firm with his specific ideologies, and it should not change with his or her own profits Got it. in election. Hmm. Shreya, yours? Shriyans, Vardhan Singh. Sir, he should be literate, and I will also run a background check and see what kind of work he has done throughout his life and how dedicated he is to from he is and the work that he has done in the area from where he is standing. Abhinav, yours? Alok, I do get your point that he or she should not be Dal Bandhu, of course. For that, law is there. No worries on that. Abhinav, your point? So I can see experience. Okay. Majista, your point? Sir, the first thing I think I would see is if the person is very prejudiced against something, then I would not vote for them because I think he should be in favor of equality for everyone. And other than that, the person should also have experience and a plan or a vision of some sort. Kirti, yours? So the first one would be to analyze how dedicated he is for the better, to improve the society, like whether his goals he are setting are aligning to the development or not. And the second would be his communication skills because he'll be delivering speeches to the audience. Isika Mittal, yours? Isika, are you there? Ayush, yours point? Ayush? Isika, are you there? Is I'm audible to you all? Yes, sir, you Yes, audible. sir, Sir, you I are think audible. her Yes, sir. microphone is not connected. Okay, and Ayush, yours? Adya, your view? Adya Gupta? Alankrita Bajpai, your view? How you will choose an MP or a MLA? Sir, I would choose my MP or MLA on the ideas that he brings forward. Like I would, like on the proposal, they do give us what they would changes they would like to bring. So I would actually see if they are in the betterment of the country or the state that he's representing. And I would also like to choose a person who is morally honest. Okay, good. Okay, Ayush, you can type it. I can see on the chat box also. What is your view on that? How you are going to choose your MP or MLA? I request Isika and Adya also, if they are not able to speak on, they can write it on the chat box. So majorly, we got the idea how we are going, or what is the parameters to choose our MLAs and MP. Why I am saying this? In the country like India, or in the country of democracy, uh, this should be exercised. This is being exercised every now and then. Elections are just like a ceremony or any family function in India. We celebrate more like cricket. We celebrate elections too. And the moment Election Commission of India actually uh, says that okay, India is going for an election, ऐसा लगता है कि जैसे त्योहार का कुछ अनाउंसमेंट हो गया है. और लाइक उत्तर प्रदेश, इफ यू सी, वी कीप ऑन डिस्कसिंग. चाय पे चर्चा सब जगह होती आई है. मोदी जी ने उसको और फेमस कर दिया है. This is actually the nature how elections are going on.
why I was asking you guys to do the criteria which you are actually looking forward. See, मैं आपको बताऊं, जब इलेक्शन होता है ना, तो जनरली यूजुअली जब इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं तो उनका एक सर्वे किया जाता है। और सर्वे में क्या क्या पता किया जाता है पता है? सर्वे में ये पता किया जाता है कि यूजुअली कितने मेल कितने फीमेल आए हैं, क्या उनका एज क्राइटेरिया है, क्या इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये जो तीन बातें हैं, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर, ये सर कॉमन एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखो Citizen of India. आलोक, आलोक, हमारा संविधान क्या बोलता है Sir, एमपी बनने के लिए? as per the Article 84, yes, Article 84 Indian Constitution, only thing you need, you must be of 25 years of age, and you must be citizen of Citizen India. of India. But sir, there's one thing, sir. That particular article also says that you can be subject to any other qualification which Parliament has made by law. But unfortunately, we are not having any other qualification which Parliament has made by law. Got it? देखो, अच्छा आलोक, एक चलो अच्छा हुआ So किसी that आप means लोगों sir, ने ये it is not necessary to get educated. हाँ, For me. इसका मतलब ये है कि संविधान ये नहीं कहता कि उस आदमी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम या मैक्सिमम कुछ होना चाहिए। ठीक है, संविधान ने तीन ही शर्त रखी है, भारतीय का भारतीय नागरिक हो, सिटीजनशिप हो, ठीक है, दूसरा चीज दिवालिया या पागल ना हो, 25 साल से ऊपर का लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हो, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा हो तो 30 साल से ऊपर का, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो तो 35 साल का। ठीक है, और ये सर क्राइटेरिया, will not hold any office of profit, कोई सरकारी हाँ, विभाग में काम नहीं कोई करना। सरकारी विभाग से कोई प्रॉफिट ना पा रहा हो, दिवालिया पागल ना हो, यही कंडीशंस हैं। तीन या क्रिमिनल चार, ऑफेंस भी तो नहीं होना चाहिए? 3 या 4। अभी नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस को लेके एक प्रॉब्लम है। क्रिमिनल ऑफेंस को लेके अ, अभी इसमें आर्टिकल चेंज हो चुका है ऑफकोर्स। आलोक, आर्टिकल में अब ये लिखा है आई थिंक कि वो पहले जो था, पहले तो था ही नहीं ऑफकोर्स, पहले देखा जाए तो इसकी बात ही नहीं होती थी कि क्रिमिनल ऑफेंस है उसके ऊपर कि नहीं है। अब ये है कि चार्ज अगर है तो लड़ सकता है, लेकिन अगर कन्विक्टेड हो गया तो लड़ भी नहीं सकता। 5 से 2 साल का होता है, 2 साल के लिए आप नहीं लड़ पाओ, उस पर लड़ना चालू कर दोगे। हाँ, और बेसिकली अगर आपके पास क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट इतने सारे क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं। क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो चार्ज लगा है तो लड़ सकता है, कन्विक्टेड हो गया तो लड़ भी नहीं पाएगा, इसीलिए लालू यादव पीछे हो गए थे। ठीक है, और सर एक और बात है, इसे एक आयरनी भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईएएस आईपीएस बात करते हैं, अगर ये लोग कन्विक्टेड हो जाएं तो जिंदगी में लोग कभी भी वो वापस नौकरी कर सकते नहीं है। लेकिन जब एमपी एमएलए की बात आती है तो उनके सिर्फ 2 साल के लिए बात ही होती है, तो 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं कि जब एमपी एमएलए को चूज करना है और आपने देख लिया है, वो पहले एक बार चूज कर लिया जा चुका है, आपको क्या क्या देखना चाहिए? लेट मी गिव यू द आइडिया कि सपोज आपके पास एक ऐसा बंदा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एमपी या एमएलए, हु इज कमिंग टू यू फॉर द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म वो जीत चुका है। अब आपको करना क्या होगा? आपने जेंडर तो वो आपको पता ही है कि इधर ही और सी इज मेल, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको देखना ये होगा कि उसने पार्लियामेंट में कितने दिन अटेंडेंस दी है। ठीक है, कितने दिन स्पेसिफिकली, जैसे आपकी क्लास होती है ऐसे पार्लियामेंट एक क्लास समझो। ठीक है, मिनिस्टर्स की क्लासरूम है वो कितने दिन अपने क्लासरूम में गया। ठीक है, वहां पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन उसने कितने पूछे, जो क्वेश्चन अवेयर में पूछे जाते हैं, उसके नाम पे कितने स्टार्ड क्वेश्चन हैं, भले उसका जवाब मिला चाहे ना मिला हो या रिटर्न में मिल गया होगा, कितने अनस्टार्ड क्वेश्चन उसने पूछे, और कितने बिल्स के ऊपर उसने डिस्कशन किया। ये जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रैली में हमारा जो एमपी है या एमएलए ये काम करता है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा एमपी एमएलए काम करता है। मतलब एज पर माय व्यू, आपको ये जरूर देखना चाहिए अपने एमपी और एमएलए के बारे में, कितने क्वेश्चन उसने पूछे, क्या अटेंडेंस रही। एक पॉइंट और है, क्या बोलते हैं, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम है। ठीक है, जो काफी टाइम पहले 1970s और 80s के बीच में 20 पॉइंट प्रोग्राम डिसाइड किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। हर एमपी और एमएलए को 20 पॉइंट प्रोग्राम पे काम करना होता है।
अपने गांव और शहर में, अपने गांव और शहर में उस एमपी और एमएलए को क्या बोलते हैं, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम को चलाना होता है। कितना वो चला रहा है, 20 पॉइंट प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें हो चुकी हैं, वो एक बार चेक करो जरूर कि 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो जो पैरामीटर्स हैं और जो जो चीजें उसको करनी है वो उसने कर दी कि नहीं कर दी। अब आओ, इलेक्शन आता है, आपको ये पता होगा जैसे इलेक्शन आता है तो इलेक्शन का मैनिफेस्टो जारी होता है। इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या होता है, किसी को पता है? सर एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, हम लोग ये काम करेंगे, ये वादे करेंगे, वादे देते हैं तरीके से, प्रोमिस विच देंगे। हाँ, तो जो कैंपेन होती है, और सर एक तरीके से वो लोग अपना कहते हैं अचीवमेंट बताते हैं कि हमने इन 5 सालों में ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा 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 हुआ था। इलेक्शन मैनिफेस्टो एडवर्टाइजमेंट में पार्टी ये बताती है कि हम आगे 5 साल क्या करेंगे और हमने पीछे 5 साल क्या क्या किया। किया। ये दो चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टो में जरूर होती हैं। और बिना इलेक्शन मैनिफेस्टो के अपने नेता को, अपने लीडर को नहीं चूज करना चाहिए। क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आप इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ो और उसने बोला कि मैंने सड़क बनवा दी, तो वर्क इन प्रोग्रेस उसका चेक करो जाके। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि उसने कितना काम किया, मैं चेक करना चाहता हूँ, तो उसका वो इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाओ, मैनिफेस्टो से उसको कंपेयर करो, व्हाट इज द वर्क इन प्रोग्रेस और व्हाट इज बीन डन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कहीं ना कहीं वो सर्वे में जरूर मिल जाएगा कि वो जहाँ का एमपी है वहां पे अगर इसने कहा कि भाई मैंने 50 पुल बनवा दिए हैं, तो 50 में कम से कम 30 पुल तो दिखेंगे, वो आपको पता लग जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस आप इलेक्शन मैनिफेस्टो से कंपेयर कर सकते हैं। कितने काउंसिल के, डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। हर मिनिस्टर को सिर्फ वो मिनिस्ट्री का काम नहीं कर रहा होता है। अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको लॉ मिनिस्ट्री के काउंसिल का भी मेंबर बनना पड़ता है, फाइनेंस का भी कई बार बनना पड़ता है, कई बार क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल का भी मेंबर बनना पड़ता है, कई बार एग्रीकल्चर का भी बनना पड़ता है। जो आदमी जितना काबिल होगा वो उतनी ज्यादा काउंसिल मिनिस्ट्रीज में उसका भाग होगा और उसका मेंबर होगा। गवर्नमेंट में उसी को काउंसिल मेंबर बनाया जाता है जो कि क्या बोलते हैं काबिल आदमी होता है। नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर से आप ये पता लगा सकते हो कि ये आदमी काबिल है कि नहीं है। फिर डेवलपमेंट की जितनी मीटिंग होती हैं उसमें कितने मीटिंग्स में उसने भाग लिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनता से उसका संवाद कैसा है, कितना एसेसिबल है, कितना अप्रोचेबल है। क्योंकि यूजुअली अगर लीडर आपका अप्रोचेबल नहीं है, लीडर आपका एसेसिबल नहीं है, मैं लखनऊ में बैठा हूँ और मेरा अगर विधायक या एमपी या एमएलए, ठीक है, वो दिल्ली में बैठा हो तो वो मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं होगा। तो इट मीन्स वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो नेता हो वो अप्रोचेबल हो। अगर ऐसे नहीं तो क्या वो फोन से सबको बात करता है? आपको पता नहीं होगा। मन की बात इसीलिए होता है, मन की बात करने का के पीछे का रीजन यही है, एसेसिबिलिटी टू द पीपल। कि प्रधानमंत्री गांव में रेडियो, देखो रेडियो जो है ना वो सबसे बेसिक मोड है सुनने का। आज भी गांव के लोग रेडियो में सुनते हैं, वो टीवी या लैपटॉप या अपने सिस्टम पे नहीं देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में आते हैं, सब लोग उनको सुनते हैं। तो एसेसिबिलिटी का एक नया चैनल उन्होंने बनाया, माई जीओवी करके जो ऐप है वो भी एसेसिबिलिटी का तरीका है कि लोगों तक कैसे एसेस है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री का। ठीक है। ये पॉइंटर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं जब आप अपने एमपी और एमएलए को बनाएंगे। अच्छा, आप मेरे को कोई ये बताएगा कि बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के बीच में अंतर क्या? सर बाई इलेक्शन तब होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग एमपी है या फिर वो डिस्को या फिर वो जिस सीट से इलेक्ट हुआ है तो या फिर वहां से डिस्क्वालीफाई हो गया हो या फिर वहां की डेथ हो गई हो, तो वो बेसिकली 6 महीने के बाद उस सीट की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्शन होता है, उसमें बाई इलेक्शन कहते हैं। और रेगुलर इलेक्शन तो हर 5 साल में होता ही है, तो बाई इलेक्शन बेसिकली वैकेंसी को फिल करने के लिए होता है। तो जनरल इलेक्शंस होता है नॉर्मल लोकसभा का, ठीक है। हाँ बाई इलेक्शंस कभी भी वैकेंसी को फिल किया जाता है। सर अच्छा एग्जांपल आपको, लिए बेसिकली इसे भी बंगाल में असनौल की सीट में वो अ, शत्रुघ्न सिन्हा एमपी बन के हाँ, आए, बाई इलेक्शन एमपी बन के आए थे। अच्छा एक केस स्टडी है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि उत्तराखंड के मतलब देहरादून के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। क्यों? सर क्योंकि हुआ क्या था एग्जैक्टली
क्योंकि इलेक्शन के टाइम में और उनके वो बेसिकली बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री बन गए थे। तो एज पर द रूल उनको 6 महीने के अंदर एमएलए बनना था या फिर एमएलसी बनना था। लेकिन सर जो टाइम पीरियड था वो सफिशिएंट नहीं था इलेक्शन कराने के लिए। 6 महीने का टाइम था, उसमें इलेक्शन बाई इलेक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया कि वो एमएलए नहीं बन पाए। गॉट इट। तो संविधान के नियम भी लगते हैं जिसमें कि एमपी और एमएलए का रेजिग्नेशन मांगा जाता है। एक आदमी अगर तो दैट मीन्स मुख्यमंत्री वो बन गया टेन्योर है, नहीं पूरा कर पाया बाय इलेक्शन। नहीं बताता हूं मैं क्या है, ही बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब वो चीफ मिनिस्टर तो बन गया लेकिन ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, आइदर एमएलए और एमएलसी। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी आदमी, ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसको विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड के अंदर में या तो एमएलए का इलेक्शन जीतना है या एमएलसी का इलेक्शन जीतना है। और उनके टाइम पीरियड में वो इलेक्शन ही नहीं हो पाया क्योंकि कोविड चल रहा था। तो कोविड में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया इलेक्शन नहीं करवा सकते, आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उनको अपनी सीट, उनको अब सीट नहीं, ऑफकोर्स उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, पड़ गया, ठीक है। इसीलिए धामी जी बने। सर हाँ जी सर, तो वो बिना एमएलए बने सीएम कैसे बन गए थे? हाँ बन सकते हेलो, हैं लेकिन 6 महीने का टाइम होता है ना। अगर आप बिना एमएलए हो सीएम बन सकते हो, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर आपको एमएलए बनना पड़ेगा। फॉर अच्छा एक चीज एग्जाम्पल अगर बताओ, मैं, पीवी नरसिम्हा राव का केस याद है आप लोग को? नहीं सर, मनमोहन सिंह का पता है। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए थे एंड ही वाज नॉट एमपी, ही वाज नॉट एमएलए, ही वाज नॉट एमएलसी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एमपी के लिए खड़े होने के लिए क्या शर्तें हैं? 3। मैं सो बताता हूँ वही कैसे वो बेसिकली बने, चीफ मिनिस्टर कैसे बने। एमएलए बनने की शर्तें क्या हैं आलोक? नॉर्मल जो होती है, जैसे आपको इलेक्शन 25 ईयर्स ऑफ एज आपका मिनिमम एज चाहिए आपको। और आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, वही इंसॉल्वेंसी वाला हो गया, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफ द प्रॉफिट, वो चीज सेम क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, वो 3 क्वालिफिकेशन उनके पास अटेन हो गई, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मंजिता, फॉर यू ओनली एंड फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे हुआ। अब वो एमएलए के लिए खड़े हो गए, सपोज करो, ठीक है, और वो एमएलए जीत गए, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बाकी सब एमएलए तो खड़े हो गए, पार्टी जीती। पार्टी के यहाँ पे एक डिसीजन होता है कि हु विल बी द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हु विल हेड, हु विल बी द हेड ऑफ द पार्टी, ठीक है। पार्टी का हेड कौन, ये चूज किया जाता है इलेक्शन होने के बाद। और राष्ट्रपति को जाके, मतलब राष्ट्रपति इन द सेंटर में राष्ट्रपति, स्टेट में गवर्नर के पास जाके देते हैं कि सर हमारे ये पार्टी जीती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम आए हैं, हमारा ये बहुमत है, और हमारे जो नेता हैं वो ये हैं, उनका नाम दे दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो एमपी, एमएलए या एमएलसी हो, लेकिन विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के दरमियान उनको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। सर जैसे अभी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये पुष्कर सिंह धामी है, वो अभी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो अभी एमएलए नहीं है। एमएलए इलेक्शन पर हार गए अपनी सीट से, अब उनकी सीट में बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन हुआ, तो जो विधायक दल का नेता जो शिवांक लिख रहा है वो यही है। विधायक दल मतलब विधायक दल का नेता नहीं, ऑफकोर्स विनिंग पार्टी का नेता हम निकालते हैं। विधायक दल का नेता पहले भी प्रपोज कर सकते हैं कि आप ये पूरे लोगों का जो वो है, लेकिन विनिंग पार्टी अपने नेता को चूज करती है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाके उसका नाम देती है। अगर वो इस पार्टी में जीता होता है, अगर वो इस इलेक्शन में खड़ा होगा और जीता होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं होगा तो उसको विद इन 6 मंथ्स जीतना पड़ेगा। गॉट इट मंजिस्ता? यस सर। एनी अदर क्वेरीज? चलो अब आते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन पे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑनरेबल रामनाथ कोविंद फ्रॉम कानपुर। ओके, एंड व्हेन हिज टर्म इज गोइंग टू एंड? 22nd July। 24th of July. 24th July. 24th July his term is going to end. And government election in India is being conducted by which authority? Sorry sir, Election in India is Election conducted by Commission of which India. Election which Commission. authority? Election Commission Election Commission, sir.
Election Commission of India. So any of the election, either state, center, by-election, or president or vice president election, the notification will be issued by Election Commission of India. So on 9th of June, a press release has been press release is given by Election Commission of India for election to be held for President of India. Okay, and the notification was issued on 15th of June. The moment this is been notified, उस नोटिफिकेशन में कुछ डेट्स लिखी होती हैं, बाई इलेक्शन की अलग है, एक दिन बाई इलेक्शन का भी मैं आपको बताऊंगा, आज प्रेसिडेंट का आपको बताता हूँ। 15 जून को नोटिफिकेशन आएगा, 20 जून को लास्ट डेट है नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए, ठीक है। 30 जून को आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज की जाएगी। 2 जुलाई को लास्ट डेट है विड्रॉ करने की, किसी को लगता है कि नहीं मेरे को नहीं लड़ना है अब, तो वो नाम वापिस ले सकता है। 18 जुलाई को पोलिंग होगी और 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा और 24 से पहले हमें हमारा प्रेसिडेंट मिल जाएगा या मिल जाना चाहिए। डेट अकॉर्डिंगली ही आती है। अब आप नोटिस करने वाली चीजें बताओ, इसमें आपको नोटिस करने वाली चीज क्या है? कोई ऐसी चीज जहाँ पे ज्यादा नोटिस करनी चाहिए? सर प्रेसिडेंट इलेक्शन में हाँ, इन डेट्स को लेके क्या? सर मेन बात जो है, जो नॉर्मल इलेक्शन जो होते हैं हमारे एमपी एमएलए के, उसको हम सिस्टम कहते हैं कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट है। लेकिन सर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है, बेसिकली उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जो आ रहा हूँ, वहां तो मैं आऊंगा आलोक, मैं वहां आऊंगा। बाकी तुम इन डेट्स के ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेगा? किस पे सर? डेट्स के ऊपर। बेसिकली सर बेसिकली ये है ना कि सर बिफोर द टेन्योर सर हमें प्रेसिडेंट मिल जाएगा, तो सर ऐसा हमने डेट शेड्यूल की हुई है कि सर वो सीट वेकेंट ना रहे। हाँ, वो वे सीट कभी भी वेकेंट ना जाए। और देखो दो चीज बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन इशू किस दिन हुआ और किस दिन लास्ट डेट है, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और उसमें उसके बाद ही आपका स्क्रूटनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नॉमिनेशन आज ही भरा जा रहा है और आज ही तक स्क्रूटनी की डेट है, स्क्रूटनी की डेट उसके आगे रहती है, ठीक है। नाम वापिस, कई ओकेजन्स में लोग नाम वापिस ले लेते हैं। अब हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, कोई बताएगा कौन कौन उसका पार्ट लेते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन पार्ट लेते हैं? कौन कौन, हाँ कौन कौन वोट करते हैं? सर इसमें जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज हैं, बोथ दी हाउसेस वो करते हैं। एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अच्छा, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि सर हम लोग डायरेक्टली वोट कर नहीं रहे ना, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव से वोट करवा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए तो बेसिकली अपर हाउस में हुआ ना? नहीं 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 नहीं, इसमें लोअर हाउस भी करता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, सुनो। अब मैं इसीलिए मेरे को पता था आप लोग का ये जरूर आएगा। देखो पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, कौन कौन वोट डालता है? सारे एमपी वोट डालते हैं। एमपी मतलब लोकसभा राज्यसभा बोथ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सारे एमएलए डालते हैं। कौन नहीं डालता है बताएगा मेरे को कोई? सर नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्यों नहीं, नॉमिनेशन वाले क्यों नहीं डालते हैं? तो प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दिए। क्योंकि सब वो लोग इलेक्टेड नहीं है ना। हाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें प्रेसिडेंट चुनना है। प्रेसिडेंट हम इनडायरेक्टली फॉर्म में चुनेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट हम चुनेंगे चुने हुए लोगों से। चुने हुए लोग कौन? पहली चीज, सारे राज्यसभा के एमपी, सारे लोकसभा के एमपी, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक है। और सारे स्टेट और यूटी के जितने एमएलए हैं वो सब मिलके वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें नॉमिनेटेड लोग कौन कौन होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, कोई बताएगा? सर नॉमिनेटेड बेसिकली अगर मैं बात करूं, लोकसभा की बात करूं, तो उसमें 20 मेंबर ऐसे नॉमिनेटेड होते हैं। उनमें बेसिकली उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में, सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट, इन सब में एक्सपर्टीज चाहिए। 12 क्या हो सर? 20 की 12?
तो 12 530 इलेक्टेड हैं और बाकी 20 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे। अब उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन रुको रुको रुको, देखो तो क्या है, 2 एंग्लो इंडियन से हुए ना सर, तो 10 2 तो एंग्लो इंडियंस हैं जो कि राज्यसभा में होते हैं। सर एक मिनट सर, हाँ वो 12 जिसकी आप बात कर रहे हैं 12 राज्यसभा में है, देखिए हाँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और 12 तो जो 2 होते एंग्लो हैं, इंडियन लोकसभा में होते हैं। हाँ एंग्लो इंडियन उसमें है ही नहीं राज्यसभा में। एंग्लो हाँ इंडियन सर। लोकसभा, एंग्लो इंडियन हाँ लोकसभा 12 अलग से नॉमिनेटेड, और ये लोग नॉमिनेटेड हैं, ये काउंटेबल नहीं होंगे क्योंकि ये नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, जो भी नॉमिनेटेड है वो काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है। मतलब कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो कितने टोटल एमपी बन गए? सर 238 प्लस 530, समवेयर 776 एमपी होते हैं जो वोट देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 4120 या 4033, कई बार 4120 बना है, कोई कई बार 433 बना है। ठीक है, इतने एमएलए मिलके वोट करते हैं, मतलब 4800 लोग करीब, हाँ 4800, 4809, 4800 लोग वोट करेंगे। ठीक है, अब वोट का शेयरिंग क्या होता है, कोई बताएगा? सर वोटिंग सिस्टम पूछ रहे हैं आप? हाँ, अब वोट का शेयर क्या है, टोटल वोट कितने हैं, इन सबको मिला के टोटल वोट कितने बनते हैं? किसी ने पढ़ा अभी तक? सर आप वोट की वैल्यू की बात कर रहे हैं सर नहीं आप? नहीं नहीं, पहले ये बताओ टोटल वोट इनका सबका मिला के कितना बनता है? सो वही सर, एमएलए से बहुत सारे हैं तो एग्जैक्ट नंबर याद थोड़ी ना है, तो हाँ एमएलए तो से मैं बता 1000 देता हूँ, 10 लाख वोट टोटल बनते हैं, 10,98,000, 10,98,903 टोटल वोट बनते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी चाहिए होती है 5,49,452, जिसके पास ये नंबर आएगा, जिस पर्सन को ये नंबर मिलेगा 5,49,452, वो प्रेसिडेंट बनता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो ये नंबर टाइप कर दीजिए सर। हाँ मैं टाइप कर देता हूँ, चलो मैं वहाँ पे लिखता हूँ तुम्हें कहाँ। देखो, सबसे पहली चीज तो इसको ध्यान देना, 10 लाख, इसमें तो वो भी कर सकते होंगे ना, टेक्स्ट भी तो। हाँ चैट कर दीजिए सर आप तो। स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी? यस सर। 10,98,903, ठीक है, ये टोटल है। ठीक, ये टोटल पीपल हैं जो वोट करते हैं। हाँ टोटल नंबर ऑफ वोट जो बनता है जाके। ठीक है, मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है 549,452, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, पता चल गया? यस सर। हाँ, इसके बाद अगर इस बार की बात करें हम, तो एनडीए के पास कितने हैं इस टाइम? एनडीए के पास हैं 525,893। ठीक है, मतलब एनडीए मतलब हमारे, ठीक है। डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ बोलिए। हेलो, और यूपीए के पास कितने हैं? 2,59,290। अब यहां देख रहे होगे आप, ये अंडू होगा, तो आपको ये पता लगा ये चीज? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो इतने चाहिए, मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कितने?
हेलो Sir, your voice is not audible. So it is audible to me. कुछ मेरे को भी, लेकिन हेलो Hello, Sir, sir. crack हो रही है. रुको मैं इसको बंद करूँ। अभी आवाज आ रही है सही? Sir, crack हो रही है बहुत. मुझे तो क्लियर आ अब रही सही आ रही है? हेलो सही है। हाँ, तो नंबर लिख लिया आप लोगों ने? सर आवाज बार बार Yes, क्रैक sir. हो रही है आवाज। अच्छा, होस्ट कोई है? हेलो Yes, हेलो sir. Sir, अब सही है. हाँ सही है ना? हाँ ठीक है। अब देखो क्या है, चीज क्या है कि मैंने, हेलो यस सर। हाँ, तो 5,49,000 मेजोरिटी चाहिए। 5,25,000 है हमारे पास। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। क्लियरली आ रही है? सर नो प्रॉब्लम। हाँ नो प्रॉब्लम सर। रुको रुको रुको, मैं देखूं क्या चक्कर क्या हो रहा है। हेलो 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 सर। हाँ हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज? You are audible to me. I'm not sure about this. वेट ए वाइल, लेट मी चेक। Sir, I think your mic is off. Hello, sir. Is I'm audible now? Yes, sir. Perfectly audible. Okay. So we have a number where we required 5,49,000 for a majority, and NDA is having 5,25,893. So somewhere they are lacking behind for. So, what is NDA and UPA? NDA basically NDA Congress. means National Democratic Alliance, that is BJP. Okay. UPA is United Union, Progressive Alliance. हाँ, United Progressive Alliance. हाँ, प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट इज कांग्रेस। ठीक है। और अब कम कितना दिख रहा है आपको वहां पे? कम दिख रहा है समवेयर 24,000। ठीक है। बीजेपी Yes, को sir. 24,000 नंबर्स और चाहिए, और बीजेपी को 24,000 नंबर और करने के लिए अगर बड़ी पार्टी में देखता हूं तो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं जिनके पास ये नंबर है, उसमें सबसे पहले तो सपा खुद है, 27,638 सपा के पास है। फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं इसलिए सपा का पता होना हमें जरूरी है। फिर 45,550 तेलंगाना वाईएसआर के पास है, वाईएसआर रेड्डी के पास, और 31,686 बीजेडी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो उनकी पार्टी है उनके पास है, और ऑल इंडिया ये तमिलनाडु की जो पार्टी है उनके पास सबसे ज्यादा नंबर है 58,672। मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं निगोशिएट करना पड़ेगा, इन में से किसी एक पार्टी के पास जाके इनसे सपोर्ट मांगना पड़ेगा।
अब सपोर्ट मांगते हैं ये कैसे हैं? So प्रेसिडेंट that majority पूरी हो जाए. मेजोरिटी पूरी हो जाए, ठीक है। अब सपोर्ट किस बेसिस पे मांगा जाएगा बताओ? सर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। नहीं, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी तो अभी यहाँ तो स्टैंड करेगी नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी तो अलग है ही। अब सपोर्ट का तरीका क्या क्या सपोर्ट का एक क्राइटेरिया रहेगा जो कॉमन क्राइटेरिया बन पाएगा? सर बेसिकली वही, अगर आप सपोर्ट में आएंगे तो आपके पार्टी के लोग को रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यही सब होता है। तो या तो एमएलए उनके खरीद लिए जाए. खरीदने नहीं, खरीदने की बात नहीं, वो इलीगल हो गया ना, लीगल बात नहीं। हाँ, नो माल ओके प्रैक्टिस, ओके नो ओके. माल प्रैक्टिस। सर तो बेसिकली यहाँ वही तरीका है कि अगर हम लोग कहें कि अगर आप हमारे से सपोर्ट में आएंगे तो हम आपके 5 या 10 लोग ऐसे हैं आपके आपकी पार्टी की, जिसको हम काउंसिल मिनिस्टर में जगह देंगे अपनी। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। और मेजर पॉइंट किस तरीके से आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं? सब पार्टी को फंड करेंगे सर, एक ऑप्शन है कि नहीं? तो ये भी नहीं, मैल प्रैक्टिस. नहीं, ये भी माल प्रैक्टिस में आता है। सर एक गुड कैंडिडेट के नाम पे डिस्कशन करेंगे सारी बस पार्टियों से। यही एक तरीका है, यही एक तरीका है कि आप ऐसा आदमी चूज करके लाओ जो वो भी चाह रहे हो और हम भी चाह रहे हो, ठीक है। अब पार्टी कौन कौन सी है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं? पहली पार्टी तेलंगाना की है, दूसरी पार्टी उड़ीसा की है, तीसरी पार्टी तमिलनाडु की है, और चौथी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, ठीक। तो अब हम ऐसा एक कैंडिडेट लेके आएंगे, या हम ऐसा कैंडिडेट ढूंढेंगे जिसको हम भी सपोर्ट करें और वो भी सपोर्ट करें। सर मतलब चारों पार्टीज फेवर में हो? जरूरी नहीं है, इनको तो एक ही पार्टी के फेवर से काम हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप एक बनाना पड़ेगा ना, कि जिसपे सब लोग निगोशिएट हो जाए। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ओके सर. प्रेसिडेंट क्यों बने? आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट क्यों बने? बीजेपी ने इनका नाम रखा, और एपीजे अब्दुल कलाम सबके चाहते थे, सबने फेवर कर दिया, वो प्रेसिडेंट बन गए। उनका तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। तो कैंडिडेट इसमें सिर्फ नेगोशिएशन स्किल कैंडिडेट को देख के कर सकते हैं, और कोई स्किल यहाँ काम नहीं करेगा पब्लिक पॉलिसी का। सिर्फ एक ही स्किल काम करेगा, वो है आप ऐसा कैंडिडेट ढूंढिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग शुरू की कि आप एमपी और एमएलए चूज करते हैं तो उसके बेसिस क्या, इसीलिए वहां से मैंने शुरू किया कि कैंडिडेट चूज करना पड़ेगा, ऐसा कैंडिडेट जो सारी पार्टियां हाँ कर रही हूँ कि हम इसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। गॉट इट? अब प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन आपको बताऊं, नॉमिनेशन करने का तरीका क्या होता है। हर आदमी नॉमिनेशन नहीं बन सकता। तुमको लगता है कि मैं जाऊं और नॉमिनेशन भरूंगा तो हो जाएगा क्या? एनी आइडिया? मैं नॉमिनेशन भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ? नहीं सर, रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस भी तो होती हैं। क्या? सर आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अरे वो सब तो चलो, सब कुछ है, वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, सपोज कर लो, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। फिर भी क्या मैं नॉमिनेशन प्रेसिडेंट का भर सकता हूँ? सर 50 लोग आपको प्रपोज करना चाहिए और 50 लोग आपको सेकंड करने चाहिए। और वो कौन लोग तब होंगे? जाके वो कौन लोग होंगे? एमपी एमपी या एमएलए? हाँ समझे? एमपी एमएलए 50 ऐसे लोग जो आपको प्रपोज कर रहे हो, मतलब हाँ हम इनको वोट देंगे, और 50 ऐसे लोग जो उसको भी सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी एमपी एमएलए, वही उसी का नाम नॉमिनेशन में जाएगा। तो मतलब 100 का सपोर्ट जिसको होगा वही आदमी नॉमिनेशन फॉर्म भर पाएगा, बाकी लोग नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सर मतलब कि 100 लोग ऐसे होंगे जो प्रपोज कर रहे हैं कि हमको वोट डालने वाले हैं। प्रपोज नहीं, 50 प्रपोजर और 50 सेकंड करें उसको। सेकंड मतलब क्या होता है यहाँ पर? सेकंड मतलब उसको भी अलाउ करना, ठीक है, वी आर आल्सो सपोर्टिंग इट। So that means 200 people हो गए ना? 100 50 is proposer, 50 is to second that propose, ठीक है। 100 कौन लोग? एमपी या एमएलए सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी नहीं। आलोक, दीपांका, रचंत्या, खुशी, प्रियांशी आके प्रदीप को अगर करेंगे तो काम नहीं होगा। मुझिस्ता आके अगर सपोर्ट करेगी तो भी काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब एमपी और एमएलए आके सपोर्ट करेंगे। तो क्राइटेरिया समझ में आया कि नॉमिनेशन कैसे भरा जाता है? यस सर. यस सर. अब जो क्राइटेरिया ये है, ये मैं आपको ये बता दिया
अब अगर ये देखोगे तुम स्टैटिस्टिकली अगर जाओगे तो इस लड़ाई में सबसे बड़ा रोल किसके पास है बताओ? परसेंटाइल वाइज सबसे बड़ा रोल किसका है? लोकसभा के एमएलए लोकसभा के एमपी का है कि राज्यसभा के एमपी का है कि एमएलए का ज्यादा है? एमएलए का ज्यादा MLA का। डेफिनेटली। MLS. एमपी तो लिमिटेड है हमारे पास, वही हाँ 700 हजारों में एमएलए हैं। लोकसभा का शेयर कम समवेयर 18% ही है, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी हैं और जो एमएलए हैं उनका 30 और 31% है स्टेक इस फाइट में, इस लड़ाई में इनका काउंट ज्यादा होता है। एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? सर किसी को उसका एक कुछ आइडिया? फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला कहते क्या है? हैं टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन्ड बाय एमएलएस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। टोटल नंबर ऑफ सर टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन्ड बाय हाँ एमएलएस एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। हाँ इन 2000। हाँ इन 2000। हाँ तब आएगा वो। और यही फॉर्मूला एमएलए का वोट निकालने का है। क्या है? एमएलए का ये था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलएस इन 2000। 1000। ये फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। एमपी का वोट स्टैटिक है 708। हर एमपी की वोट की वैल्यू 708 है, ठीक है, 708 पॉइंट। लेकिन एमएलए की वोट पॉइंट जो है ये वेरी करती है। ये किस पे वेरी करती है? पॉपुलेशन पे जैसे वहां की बढ़ेगी। पॉपुलेशन। और हम किस ईयर के पॉपुलेशन अभी मानते हैं? 2011। नहीं, यही यही एक दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। किस ईयर की पॉपुलेशन को इसमें काउंट किया जाता है? 1971 के सेंसस को। अच्छा हाँ हाँ याद है याद है याद है याद है। अब याद है मुझे। और क्यों 2022 में 1971 के सेंसस को क्यों माना जा रहा है? तो उसके बाद कभी क्या कहते हैं जो सर मैंने जो पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद कभी डिलिमिटेशन कमीशन बनी ही नहीं। ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? हम 71 को ही मान के आ रहे हैं, 2011 को मान लेते, 2001 को ले आते, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आंसर लिखा हुआ है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों हम 1971 की पॉपुलेशन को मान रहे हैं। सर एक जो मैंने ये इसको एलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड था, वो तो एमपी एमएलए का मैंने रीजन पढ़ा था आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें लिखा गया था कि अगर जब तक 2026 में, जब तक 2026 का डेटा आपके पास आता नहीं है, सेंसस का डेटा नहीं आता है, तब तक आप 1971 का ही फॉलो करोगे। ये चीज मैंने हाँ एलोकेशन ऑफ सीट्स में पढ़ा था। ये सही बोल रहे हो, वहां पे ये लिखा है कि हम अब जो डेटा लेंगे वो अभी का नहीं लेंगे, हम आगे का लेंगे, ठीक है, 2026 का। 2026 का डेटा किस बेसिस पे लेंगे वो भी चेक होगा, लेकिन 71 को ना, 71 को लेना और 1991 और 2001 को ना लेने के पीछे एक रीजन लिखा हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट कि रीजन क्या है, ठीक है। सर एक समझता है कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग 2011 के बेसिकली अगर उसके पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हो जाएंगे सर एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन कुछ और थी और यहाँ पर कुछ और है, नंबर ऑफ वोट्स की पॉइंट्स वैल्यू बढ़ेगी। पहली चीज तो हमारा जो 545 जो आ रहा है ना और 275 जो आ रहे हैं, वही ये हट भी जाएगी। उसी के बेसिस पे है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये उसके बेसिस पे है, तो आप जब इन लोग के जो नंबर्स हैं एमपी और एमएलए के नंबर उस बेसिस पे है, तो इसको कैसे चेंज करोगे? गॉट इट? यस सर। हाँ कि पहले वो करने के आपको एमपी एमएलए चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट इसके चेंज कर लिए पाओगे। आपको पहले एमपी और एमएलए के नंबर चेंज करने पड़ेंगे, तब लॉन्ग यहाँ पे प्रोसेस। आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ रह गया? हाँ, अब एक नई चीज, कितने लोग कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किसी ने पढ़ाई की इसके बारे में? कितने लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया अभी तक? सर 11 लोगों ने कर दिया है और एक का रिजेक्ट हो गया है शायद। हाँ 11 लोगों ने कर दिया है, एक का रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो 2 बार कॉन्टिन्यूसली बना हमारे यहाँ? ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट जो कॉन्टिन्यूसली 2 बार प्रेसिडेंट बना? इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बस, ही इज द ओनली पर्सन जो इलेक्टेड ट्वाइस हुए,
उसके बाद से कभी भी प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्वाइस नहीं हुआ। एक स्टांस ऐसा भी रहा प्रेसिडेंट इलेक्शन में जहां पे शायद नीलम संजीवन रेड्डी खड़े हुए थे, आई फील, ठीक है। और वहां पे 27 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था और 26 लोगों का नॉमिनेशन अपने आप कैंसिल हो गया था, क्योंकि उनको किसी ने सेकंड ही नहीं किया था। प्रपोज और सेकंड में नंबर नहीं आए थे उनके, जो मैं बात कर रहा था कि 50 लोग प्रपोज करना चाहिए, 50 सेकंड करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सबको खारिज कर दिया और अकेले वही बचे और वो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट इलेक्शन। थोड़ा जो लोग कंपनसेटरी वर्क प्लान जिनके दिया गया है, गो थ्रू इट, 24 तक उसको काम और करिए सर डेली बेसिस इसमें पे। आपने वो बताया था कि जो सिंगल ट्रांसफर वो सिस्टम जो होता है, यहाँ प्रेफरेंस हम लोग देते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन में। हाँ, क्यों देते हैं, क्या वो जरूरी है? तो मुझे पहले ये लॉजिक बताओ। नहीं पता उसके पीछे, लेकिन इतना पता है कि हाँ ऐसे ही वोटिंग होती है। अच्छा, प्रेफरेंस देना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ पहले। सर एक तरीके से देखा जाए जरूरी है, क्योंकि बेसिकली मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर प्रेसिडेंट को छोड़ के भी जनरल इलेक्शन की बात करें, लोकसभा की बात करें, अगर मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ तो एक तरीके से जो एमपी है, जो कैंडिडेट है, तो उसको हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि उसको पता है कि एक पर्टिकुलर एक एरिया में 75 हिंदू से 25 मुसलमान है, तो मुझे हिंदू खुश करना है। तो अगर लेकिन प्रेफरेंस की जब बात आएगी तो उसको सबको खुश करना पड़ेगा, सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस वाला सिस्टम जो होता है वो कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स को एक तरीके से हटाता है। और सर ये सिस्टम कई सारे कंट्री लेकिन फॉलो लेकिन लेकिन क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है। हाँ, अब होता क्या है, ये ऑप्शन वहां है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो कोई भी सेकंड नाम लिखता ही नहीं है, ठीक है। सब लोग पहले प्रेफरेंस को देके छोड़ सकते हैं, ऑल्दो उसको प्रेफरेंस वाइज देना है कि जो डिफरेंस है। होगा क्या इसका, प्रेफरेंस का फायदा क्या होगा बताओ? सर प्रेफरेंस का फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी डी, और हाँ। सी एलिमिनेट हो चुका है, और सी की जो प्रेफरेंस है ना, सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सी की सेकंड प्रेफरेंस थी, जो जिन लोगों ने सी को वोट किया उनकी हाँ। प्रेफरेंस थी ए और बी, तो दोनों में वोट बढ़ जाते हैं इस तरीके से जब आप वो एलिमिनेट हो जाता है। नहीं, फिर से समझाओ। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी कैंडिडेट हैं और पी हम्म। क्यू आर एस टी हमारे वोटर्स हैं, तो जो नहीं, सी। अब देखो देखो सुनो, ABCD हमारे कैंडिडेट हैं, डोंट गो फॉर MP इलेक्शन, ठीक है। यस सर। प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करो सीधा। ABCD हमारे 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने C को वोट दिया, C को फर्स्ट रखा, B को सेकंड रखा, ठीक है। सबने अपनी अपनी प्रेफरेंस दी होगी। प्रेफरेंस देने से फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा? हेलो हेलो। यस सर। हाँ लोग बताओ, प्रेफरेंस देने से फायदा क्या? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, प्रेफरेंस देने से देखो, प्रेफरेंस ये तब काम करेगी जाके जब दो लोग का बराबर वो है, ठीक है। अनटिल अनलेस दोनों का मतलब बराबर, इक्वल वोट्स हैं। जब इक्वल वोट जाए तब तो प्रेफरेंस काम करेगी, अदरवाइज प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वहां पे कोई भी सेकंड नाम लिखता ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। देखो सबको पता है, तुम्हें मैंने डेटा भी बता दिया कि इनको 25,000 कम पड़ रहे हैं, तो 5-25 तो उसी का नाम लिखेंगे यार, एक का। तो सेकंड नाम देने का मतलब नहीं आता, इसलिए लोग कोई कोई प्रेफरेंस देते नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्विच ऑन देयर वीडियोस इफ दे कैन, सो दैट वी कैन टेक व्हाट यू कॉल अटेंडेंस आल्सो। कुछ समझ में आया सबको, कोई डाउट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है कि बिकॉज दिस इज नॉट बीटेक स्टडीज, आई डू एग्री ऑन दैट, लेकिन ये कंट्री के लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं ये। हाउ द इलेक्शंस आर देयर ऑन द बोर्ड, हाउ वी आर डूइंग द इलेक्शंस। रिक्वेस्ट ऑल दोज हु कैन एक्चुअली स्विच ऑन, सो दैट खुशी को डेटा भी मिल जाएगा कि हाँ दिस many आर देयर, एक्चुअली दे वर प्रेजेंट। रेस्ट जिस किसी का भी काम बाकी है, जिस किसी को भी खुशी ने स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक मेल भेजा है, प्लीज गो फॉर ए कंपनसेशन वर्क ऑन दैट, ठीक है।
नहीं तो फिर क्या बोलते हैं एलिमिनेशन की बात आती है, वो ठीक नहीं है. एंड वी विल मीट टुमारो अगेन विद न्यू टॉपिक. ठीक है, एंड रेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू.